का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो भी छाप है उसके मुताबिक ये संस्था काम कर रही है। इस संस्था को और जन कल्याण के कार्य को आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसे त्रिवार वंदन करते हैं। First, I would like to express my appreciation for the hard work and dedication and renunciation that's gone into making such an incredible building.
आपले मोबाईल स्विच ऑफ करा. ब्रह्मा हॉल मध्ये तिथे बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे आणि तिथे स्क्रीन सुद्धा लागलेला आहे. कृपया शांतता असू द्या. सुपटीत नावाच्या नदीच्या घाटावर त्यांनी आंघोळ केली आणि मग ती खीर ग्रहण केली. जर मला ज्ञान प्राप्त होणार असेल तर हे पात्र गव्हाच्या विरुद्ध दिशेने जाऊ दे. बाबर दादा इकडे फोन द्या इकडे दादा. सिद्धार्थ गौतम पद्मासन घालून आणि पाठ सरळ ठेवून त्या पिंपळाच्या झाडाखाली बसले. त्यांना ज्ञान प्राप्त झाले. ज्ञानप्राप्तीनंतर ते मुक्त झाले.
भगवान बुद्धांच्या मनात एक प्रश्न आला, सर्वप्रथम मी धर्म उपदेश कोणाला देऊ? माझ्यासोबत 5 तपस्वी होते. निरंजरा नदीच्या काठी तपश्चर्या करीत असताना ते सोबत होते. तपश्चर्येचा त्याग केल्यामुळे ते 5 तपस्वी रागावून सोडून गेले होते. माझ्या धम्माचा उपदेश मी त्या 5 तपस्व्यांना देऊ इच्छितो. भगवान बुद्ध त्या 5 तपस्वींकडे सारनाथ येथे जातात. बुद्ध येत आहेत हे 5 जणांनी पाहिले तेव्हा त्यांचे स्वागत करावयाचे नाही असे ठरवले. परंतु बुद्ध ज्यावेळी त्यांच्या जवळ आले ते 5 परिव्रजक त्यांनी ठरविले त्यानुसार वागू शकले नाहीत. बुद्धाच्या व्यक्तिमत्वाचा त्यांच्यावर एवढा प्रभाव पडला की ते आपल्या जागेवरून उठून उभे राहिले. पहिल्या भिक्षूंनी त्यांचे चिवर सांभाळले. अरे इनपुट मध्ये गेल्यानंतर आउटपुट बाहेर निघते ना, तिला आवाज येईल ना. मग दुसऱ्या भिक्षूंनी त्यांच्यासाठी आसन ग्रहण केले. हो हां, मग राहू दे चालू. आवाज येऊ राहिला का तिकडे? एकदा चेक करून येतो. तिसऱ्या भिक्षूंनी त्यांच्यासाठी आसन तयार केले. चौथ्या भिक्षूंनी पाय धुण्यासाठी पाणी आणले. आणि त्यांचे पाय धुतले. 5व्या तपस्वींनी पुष्प देऊन भगवंतांना नतमस्तक झाले. भगवान बुद्धांनी नव्या सद्धम्माचे प्रवचन दिले. मोकळाची डॉक्टर लाईव्ह करायला आहे. एक त्या 5 परिव्रजकांचा भगवान बुद्धांविषयी आदर एवढा अमर्याद झाला की ते बुद्धाला शरण गेले आणि आपले शिष्य म्हणून आपला स्वीकार करावा अशी विनंती करू लागले. आणि ए भिक्खू असे संबोधन करून भगवान बुद्धांनी त्यांना आपल्या धम्मात सामील करून घेतले. ते पंचवर्गीय भिक्खू प्रसिद्ध झाले. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. त्यानंतरच संपूर्ण जगात बौद्ध भिक्खू भिक्खुनी उपासक उपासिका बुद्धाच्या धम्माचे शुद्ध पालन करू लागले. 30 सिद्धांताची दीक्षा देतो. प्रज्ञा, करुणा आणि समता. बौद्ध धर्मात जगातील शोषण थांबू शकतो. माझा असा विश्वास आहे की एक दिवस बौद्ध धर्म 3 सिद्धांतांची दीक्षा देतो. प्रज्ञा, करुणा आणि समता. माझा असा विश्वास आहे की बौद्ध धर्मात जगातील शोषण थांबू शकतो. एक दिवस असा येईल की मानवतेच्या रक्षणासाठी केवळ भारतच नव्हे तर सारं जग बौद्ध धर्माचा स्वीकार करेल. जन्माबरोबरच प्रतिकूलता डोंगरासारखी. ते सर्व पचवून बाबासाहेब माणूस म्हणून प्रस्थापित झाले आणि कोटी कोटी बांधवांना जागृत केले. शोषित दलित पिढीतील लोकांना माणूस म्हणून जगायला शिकविले. 14 ऑक्टोबर 1946
1956ला बौद्ध धर्माची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नागपूर या ठिकाणी दीक्षा घेतली। नागपूर येथील बौद्ध धम्म दीक्षा सोहळा विजयादशमीच्या दिवशी आपल्या 5 लाख अनुयायांना बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली। धम्मचक्र प्रवर्तनाच्या दिवशी आपल्या बांधवांना मार्गदर्शन केले आणि 22 प्रतिज्ञांचे काटेकोरपणे पालन करावे असे सूचित केले। I shall have no faith in Brahma, Vishnu and Mahesh, nor shall I worship them. I shall have no faith in Ram and Krishna, who are believed to be the incarnation of God, nor shall I worship them. I shall have no faith in Gauri Ganpati and other god and goddess of Hindu, nor shall I worship them. I do not believe in the incarnation of God. I do not believe that Lord Buddha was the incarnation of Vishnu. I believe this to be shrill madness and false propaganda. I shall not perform Shraddha, nor shall I give Pindadan. I shall not act in a manner violating the principle and teaching of the Buddha. I shall not allow any ceremony to be performed by the Brahmin. I shall believe in the equality of man. I shall endeavor to establish equality. I shall follow the eightfold path of the Buddha. I shall follow the paramitas prescribed by the Buddha. I shall have compassion and loving kindness for all living beings and protect them. I shall not steal. I shall not tell lies. I shall not commit any sexual misconduct. I shall not take intoxicants like liquors and drugs. I shall endeavor to follow the eightfold path of Buddha and practice the compassion and loving kindness in everyday life. I renounce Hinduism, which is harmful for humanity and impedes the advancement and development of humanity because it is based on inequality, and I adopt Buddhism as my religion. I firmly believe that Dhamma of the Buddha is the only true religion. I believe that I am having a rebirth. I solemnly declare and affirm that I shall hereafter lead my life according to the principles and teaching of the Buddha. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। थँक्यू। अशा हा जयासारो यांचा या ठिकाणी आपल्याला जे रवचनाच्या माध्यमातून लाभ मिळत आहे तो माननीय रोजानाखाली शामळे मॅडम यांच्या अथक प्रयत्नाने या ठिकाणी झालेला आहे। माननीय विचारांना विनम्र अभिवादन। टुडे व्हेरी इम्पॉर्टंट जिन्हें रक्षिता and all व्हिडिओचा फ्लॅप बंद करा ना Bhante Sanj मला व्हिडिओ जाईल from Thailand and also ओके सर ओके the follower of Buddha थँक्यू सर from Thailand.
Dr. Babasaheb Ambedkar as follows. Ladies and gentlemen, I am very eager to say in front of Venerable Bhante Jaya Saro, Bhante Bodhisattva Dr. Babasaheb Ambedkar, you are already knowing that Dr. Babasaheb Ambedkar is the chief architecture of Indian Constitution. And Indian Constitution, our world is knowing, to frame on the philosophy of Tathagata Buddha, which already Dr. Babasaheb Ambedkar indicated in the Constitution. Equality, maintaining the equality is very important. Because of that, everywhere, before the freedom and after the freedom, also, discrimination and inequality, everywhere we are saying here in India. In education, there is a discrimination. In also the religion, there is a discrimination. In economical position, there is a discrimination. And on the social ground, we are seeing all the world. There is a discrimination also on the ground of the social position. Therefore, Dr. Babasaheb Ambedkar indicated that we should maintain the equality in economy, in education, in society, and for all this purpose, there is only remedy. We should maintain the humanity. Without the humanity, we are in past, in also present and future, we will be the believer. Therefore, Honorable Bhante Jaya Saro, I am requesting to you, definitely you are thinking on that point. Why Dr. Babasaheb Ambedkar indicated that you should take the Buddhist religion, because of that there is not any discrimination. And so, Venerable Bhante, this institution, Dr. Babasaheb Ambedkar, multiple foundation, started from actually 2006, and the work of this construction how we started actually from the Buddha Purnima 2014. Today we are all looking to this building. Near about 45 crore rupees we have spent on the construction on the plot. And already in the Buddha Vihara, Mr. Gadwadur Sahab told us that without taking any help from the government, and also those people are maintaining the discrimination in this country, we are not taking the single MP from them. On the basis of the Dr. Babasaheb Ambedkar is saying, every follower of the Tathagata Buddha is giving the 5% of their income to the progress and the development of the poor person of this country. Without maintaining the equality in the education and without maintaining the equality in the economic position, it's highly impossible that the maintaining the equality overall. That's why, Honorable Bhante, I am saying if few were that everyone should cooperate us. Those are ready to
If we want freedom forever for this country, there is impossible without maintaining the equality in the education and the economical position. That's why there is a need of the equality for spreading the Buddhist religion. If we want to spread the Buddhist religion, humanity is essential, and for the humanity, equality in the education and the economic position is very important. And for that purpose, our institution is struggling is hardworking. Because of that, we are all the follower of the Dr. Babasaheb Ambedkar, and we are the follower of the Thagat Buddha. In Maharashtra, Mahatma Jyotiba Phule, definitely, you had been studied. Those are social workers. Mahatma Jyotiba Phule, राजर्षि शाहू महाराज, राजमाता जिजाऊ, शिवाजी महाराज, गाडगे महाराज. Because of that, venerable Bante, your knowledge is very vast, and you are spreading the Tathagat Buddha's way. To come on the path of the Tathagat Buddha, our India should go on that path to maintaining the all social workers philosophy and spreading the philosophy for our development and for everywhere's freedom of this country. With this word, I am finishing my very few words, and Venerable Bante should take the more and more time or guide us. Thank you, Jai Bhim. Sir, to introduce Pujya Bhante. Thank you. Ajan, with your permission and blessings, Namo Buddhaya, I take the liberty to introduce Ajan. Namo Buddhaya. माझी मराठी फार चांगली नाही आहे, तर मी हिंदी मध्ये अजान का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा. अजान जय सारो. हम उन्हें अजान कहते हैं बड़े प्रेम से. ये शब्द अजान जो है ये असल में हमारा भारतीय शब्द है आचार्य. आचार्य का बना आचान, तो आचान बना तो फिर वो अजान, तो आचार्य जय सारो. अजान जय सारो वैसे तो हैं इंग्लैंड से. इनका नाम था शॉन माइकल शिवरटॉन. इनका जन्म हुआ है 1998 में, और इन्हें इंग्लैंड में पता चला कि थाईलैंड में एक परंपरा है जो अरण्य में जाके साधना करती है, और वहाँ पे एक बड़े वरिष्ठ भिक्षु हैं जो अमरीशी थे. उनका नाम था उस समय पे अजान सुमेदो था. अभी हम उन्हें बड़े प्यार से लुम्पो सुमेदो कहते हैं. लुम्पो का मतलब प्यारे पिताजी. तो प्यारे पिताजी सुमेदो जी की छत्र छाया में ये अनागारिका बने. अनागारिका की ट्रेनिंग करते हुए आगे जाके फिर इन्होंने उपसंपदा ली अपने बहुत प्यारे गुरुदेव अजान चा से, और उन्हीं की छत्र छाया में ये भिक्षु बने रहे. इन्होंने शायद 40 से ऊपर साल बिताए हैं भिक्षु के, और वहाँ के राजा उन्होंने इनको 3 बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी हैं, और बड़े प्रसिद्ध भिक्षु माने जाते हैं इस परंपरा में. और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इनके चरण भारत में पड़े, और इसी से इनका छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ. बाकी फिर अजान अपने शब्दों में खुद ही बताएंगे आपको. सो
I gave us a brief introduction about you, Ajahn, and I will request the chairman of this organization to make the formal request to give a desana. जैसे संघ है, उपासक उपासिका हैं, ये लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसमें हमें बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म का झलक दिखाई देता है. We all have a part to play in upholding the principles of Buddhism and spreading them throughout our own personal world, the world of our family and friends and community. तो बौद्ध धर्म का जो नियम है उनका आचरण करना ये हम सबको चाहिए, जिसके द्वारा हम बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें. The most important thing is that you express the Dhamma in your life, and we can see their own personal conduct is not in harmony with their high words. So if we want to contribute to the spread of Buddhism, then the most important thing is to practice the Dhamma and to express the Dhamma in our actions, our speech and our thoughts. बौद्ध धर्म हमारे आचरण में झलकना चाहिए. बहुत से ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म की अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन क्या उनका आचरण उनके शब्दों के अनुरूप है क्या, ये देखना जरूरी है. तो वास्तव में बौद्ध धर्म का प्रचार हमारे आचरण से होना चाहिए. So if your husband or your wife does something you don't like and you feel angry thought, angry feeling arising in your heart and you let it go in front of your children, that means you are spreading Buddhism to your children. You are showing the Buddhist way to let go of anger. तो पति या पत्नी कुछ गलत कहते हैं या गलत व्यवहार होता है, तो अगर आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं, तो आप बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण रख रहे हैं बुद्धिज्म का. Every good, kind, generous action is spreading Buddhism. हर अच्छा व्यवहार आपका बुद्धिज्म का प्रचार कर रहा है. So when people see us, they say, oh, that person is so kind and compassionate and calm and mindful. Oh, they are Buddhists. This Buddhism must have something very special that it can produce people like this. तो जब कोई बौद्ध बड़ा ही मैत्रीपूर्ण, करुणा और सजग होकर व्यवहार करता है तो लोगों को आकर्षित करता है. वो सोचते अच्छा तो बौद्ध लोग हैं, ऐसा उनको लगता है. I was born in England and I first started to study Buddhism from by reading books at the age of about 15 or 16 years old. मेरा जन्म ब्रिटेन में हुआ और interest and pull towards India
And so when I found that India was also the birthplace of Buddha, then I wanted to come to India very much. तो स्कूल की उम्र में मैं जब पढ़ता था बौद्ध धर्म के बारे में और क्योंकि बुद्ध भारत से है तो मेरा भारत के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया. When I was 17 years old, I left England and I traveled to India, but not by aeroplane, but by land. जब मैं 17 साल का था तब मैंने इंग्लैंड छोड़ा और भारत की ओर यात्रा की, लेकिन हवाई जहाज से नहीं, मार्ग से. For the first 6 months I was here, I traveled all around India. I entered India from Amritsar in Punjab. I went to Delhi, Agra. तो ज़मीन के रास्ते मैं आया अमृतसर से होते हुए, फिर पंजाब, दिल्ली, राजस्थान होते होते हुए Mumbai, Goa, Kerala. मुंबई, गोवा, केरला ये सब घूमते रहे. And to Madurai, Kodaikanal, Chennai, Orissa, Kolkata. तो लगभग सभी प्रांत मदुरई, केरला दक्षिण में और इधर कलकत्ता ये सब उन्होंने यात्रा की. And to Rishikesh and to Himachal Pradesh, and then after 6 months I left. तो ऋषिकेश उत्तर प्रदेश होते हुए 6 महीने के बाद मैंने भारत छोड़ा. I did not leave because I wanted to leave. मैंने भारत इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं छोड़ना चाहता था. I left because I had no money. मैंने भारत इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. I wanted some adventure and some challenge. तो मुझे कुछ एक एडवेंचर जैसा कुछ नया कुछ देखना था और अनुभव करना था. I decided to try to travel. At that time I was in Pakistan. To travel from Pakistan back to England with no money, only depending on the generosity of the people I met. तो मैं तब पाकिस्तान में था और वापस अपने देश जाना चाहता था और जो लोगों ने दान दिया उसके आधार पर ही मैं सफ़र कर रहा था. I traveled in this way across Pakistan, Afghanistan and Iran right to the capital of Iran, Tehran. तो मैं इस तरह से लोगों के मदद से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तेहरान तक पहुंच गया. I had one coin somebody gave me. मेरे पास कोई एक सिक्का था जो जिसने किसी ने मुझे दिया था. And I was walking in the morning to a soup restaurant. और मैं सुबह जा रहा था एक रेस्टोरेंट की ओर. And I passed a lady on her way to work. तब एक महिला अपने काम पर जा रही थी. By this time I was very thin. I was quite unhealthy and I think I was quite dirty. मैं उस समय बहुत ही कमज़ोर था, पतला था और बहुत मैला भी था, धूल मिट्टी से. This lady looked at me in a very stern way and she told me to follow her. तो उस महिला ने मेरी हालत को मुझे देखा और कहा मेरे पीछे आओ. She went back to her flat, to her
her home and she pointed to the bathroom. She wanted me to take a shower. तो वो मुझे अपने घर ले गए और वहाँ पर अपना बाथरूम बताया और कहा कि नहा लो. She bought some clothes belonging to her son and gave them to me and took my clothes and threw them away. उसने अपने बेटे के कपड़े लाए और मुझे दिए और मेरे कपड़े निकाल कर फेंक दिए. When I got out of the shower, she had made a big breakfast for me to eat. जब तक कि मैं नहाकर बाहर निकलता तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बड़ा नाश्ता तैयार किया था. It was so delicious. वो बहुत ही स्वादिष्ट था. But I could see she was looking at the clock and she was worried about getting to work. लेकिन मैंने देखा कि वो घड़ी की ओर देख रही थी और शायद उसको काम पे जाने का समय हो रहा था. So when I finished my breakfast, she took me back out onto the road where we first met and she left. तो फिर जब मेरा नाश्ता पूरा हुआ तो उन्होंने मुझे वहाँ से ले गई और जहाँ पर से मुझे घर लाई थी वहाँ पर छोड़कर वह चली गई. All this time she did not say one word. इस दौरान उसने मुझसे एक भी शब्द बात नहीं किया. And she did not smile. She very stern faced. और उसने मुस्कुराया भी नहीं, एकदम गंभीर रूप से देखती थी हमेशा. So I traveled further, another many hundred kilometers west to the border between Iran and Turkey. तो और कई 100 किलोमीटर में चला और जो कि तुर्की और ईरान के बॉर्डर पर था, सीमा पर. And there I lost my passport. और वहाँ पर मेरा पासपोर्ट गुम हो गया. Eventually, a kind person paid for bus ticket to return to capital city of Tehran. लेकिन किसी व्यक्ति ने बड़ी दया कर हमें पैसा दिया जिससे मैं वापस तेहरान पहुँच गया. And on arriving in Iran, one teenage boy came up to me and said, "Would you like to teach me English? You can come and live with my family." तो वहाँ पर एक तरुण लड़का आया और उसने कहा कि अगर तुम मुझे अंग्रेजी सिखा सकते हो तो मेरे साथ आकर मेरे घर रह सकते हो. And I said yes. और मैंने कहा हाँ. And I lived with this family for maybe 4 months. और मैं उस परिवार के साथ 4 महीने रहा. And I got a job teaching English. और मुझे अंग्रेजी सिखाने की नौकरी मिल गई. I got a new passport. मुझे नया पासपोर्ट भी मिल गया. And I changed my mind. I would not go back to England. और मैंने अपना विचार बदल लिया कि मैं वापस इंग्लैंड नहीं जाऊंगा. I want to come back to India. मैं वापस भारत आना चाहता था. So I came all the way back to India. तो फिर वापस मैं भारत लौट आया. But this time I did not want to travel. I just want to find a quiet place for meditation. लेकिन इस बार मैं भारत में घूमना नहीं चाहता था, लेकिन एक शांत जगह चाहता था. And I found such a place in Rajasthan. और मुझे ऐसी शांत जगह राजस्थान में प्राप्त मिली. I was meditating every day. मैं रोज ध्यान करता था. Experience in meditation. और कुछ समय बाद मुझे ध्यान में एक अनुभूति हुई.
but it wasn't the kind of experience I was expecting. ये अनुभूति जो हुई इसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था. While I was meditating, I remembered this lady who did not know me, who was a stranger, and she took me into her house and she gave me food without any desire for any reward at all, only from the goodness in her heart. तो ध्यान में मुझे याद आया जिस महिला ने मुझे सड़क पर लेकर अपने घर ले गई, नहलाया, खिलाया, और ये सब उसने किया बिना किसी. Then I thought of my own mother. I was so moved by this lady in Tehran who gave me one shower, one set of clothing, and one breakfast. So moved I had tears in my eyes. And then I thought of my own mother. How many hundreds of meals did she give me? Every single item of clothing from when I was born until I left home. She gave me so many things. And why do I have no tears in my eyes? Because I took for granted, I thought this is my right. It's her duty to do these things. But now I could see with the fresh eyes, and I appreciated my mother and my father so much more than ever before. तो जब मैंने याद किया उस महिला ने मुझे एक बार भोजन दिया, एक बार कपड़ा दिया, एक बार नहाया, तो जब मैं इस चीज़ को याद किया तो मेरे आंखों में आंसू आ गए. और फिर मुझे अपनी माँ की भी याद आई जिसने एक बार नहीं कई 100 बार मुझे खाना दिया, कई 100 बार मुझे कपड़े दिया, लेकिन उसके लिए मुझे मेरे आँख में आंसू नहीं आए. क्यों? क्योंकि मैंने उसे ऐसे ही ले लिया था, उसे कृतज्ञता भाव से मैंने उसे लिया नहीं था. So this is the path of meditation. When we calm our mind and we just stop all the busy running around, then we can find ourselves and we can communicate with ourselves. इस तरह से जब हम अपने विचारों को शांत कर देते हैं और अपने अंदर झांकते हैं तो फिर हम अपने आप को जानने लगते हैं. So these days with the social media, we know the news around the world immediately. तो जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा आज तो दुनिया की कोई भी खबर हम तुरंत जान लेते हैं. We can even know what kind of curry our relative is eating in Bombay. यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार कौन सी सब्जी खा रहे हैं मुंबई में ये भी हमें पता चल जाता है. So we know so much news about other people and other places, but we don't know our own news, what's happening inside ourselves. तो हमें बाहर की सारी समाचार पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन अपने बारे में समाचार हमें प्राप्त नहीं होता, अपने अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता. So in Buddhism, we are interested in learning. We are learners. We are learning about ourselves by looking directly inside. बौद्ध धर्म में हमें सीखने की रुचि होना चाहिए, जो अपने अंदर झांक कर हमें सीखना चाहिए. So many religions put the emphasis on faith, and the more faith you have, the better. बहुत सारे धर्म विश्वास करने पर जोर देते हैं
और जितना ज़्यादा विश्वास रहा उतना अच्छा, ऐसा बताते हैं। But in Buddhism we are students of faith. We are interested, what is faith? What is the value of faith? What are the dangers of faith? What role does faith play on the Eightfold Path? तो लेकिन बौद्ध धर्म में हम जो है वो श्रद्धा या विश्वास के विद्यार्थी हैं कि श्रद्धा करने से क्या फ़ायदे हैं, न करने से क्या नुकसान है, या गलत श्रद्धा करने से क्या नुकसान है, आर्य अष्टांगिक मार्ग में श्रद्धा करने से क्या फ़ायदे हैं, इसके हम विद्यार्थी हैं। So we look at faith and we see the value of faith is it makes our mind very focused. It gives energy to the mind. तो ये श्रद्धा को अगर हम देखें तो ये श्रद्धा हमारे अंदर एक एकाग्रता लाती है किसी चीज़ पर, को उद्देश्य को लक्ष्य रखकर। But we can also see that there is a danger in faith. If we do not have wisdom taking care, governing faith, it can easily become superstition or fanaticism. तो श्रद्धा में रखना तो चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ प्रज्ञा अगर ना हो तो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, उग्रता आदि में उत्पन्न हो जाती है। तो श्रद्धा के साथ प्रज्ञा का होना जरूरी है। In Buddhism, our faith is not in God or gods. Our faith is in human capacity for liberation, for enlightenment. बुद्धिज्म में हम किसी ईश्वर या परमात्मा में विश्वास नहीं करते, लेकिन अपने आप विश्वास करते हैं कि अपनी मुक्ति में हम विश्वास करते हैं। The Buddha said to the Savaka that I tell you to abandon all of the defilements. It is because you can do it. If you could not do it, I would not teach you to do it. If the Tathagata teaches you to develop all of the good qualities, it is because you can do it. If you could not do it, I would not teach. तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं अपने श्रावकों को कि अपने विकारों को दूर करो, और विकारों को अगर दूर नहीं कर सकते तो तथागत ये नहीं कहते कि दूर करो, लेकिन उसको दूर किया जा सकता है, इसलिए दूर करने के लिए कहते हैं। उसी तरह से अच्छी बातें उसको स्वीकार करो, उसको अपने जीवन में उतारो। ये तथागत इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे अपने जीवन में उतारा जा सकता है, उसका पालन किया जा सकता है। So the Buddha's teachings are focused on human life, human body, human mind. And so as Buddhists, it is our responsibility to put these teachings to the test. We don't just believe because the Buddha taught us or because our teachers teach us, but we take the teaching and we look, is this true? तो बौद्ध धर्म कोई विश्वास की बात नहीं है, ये अपने अंदर झांक कर देखने की बात है, अपने आचरण में उतारने की बात है। So we can start off with the very basic teachings about giving and sila, and then when we see in ourselves, yes, the Buddha is teaching the truth. Yes, this is true. Oh yes, this is true. Yes, this is true. And each time we prove the truth, our faith becomes stronger. तो बुद्ध की जो शिक्षा है, दान कहो, शील कहो, इसे अनुभव में उतारना चाहिए और अनुभव करके देखना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, ये सच है, ये अच्छा है,
इस तरह से जब हम अनुभव से जानते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो हमारी श्रद्धा और भी बलवान होती रहेगी। So let me give an example of case of giving. तो मैं एक दान के बारे में एक उदाहरण देना चाहूँगा। So the Buddha said it is more merit to give with no hope of any reward than to give with some hope of some reward of some kind. भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब कुछ देते हो तो कुछ उम्मीद किए बिना उनसे देना चाहिए, उसका ज़्यादा पुण्य है। देते वक्त कभी भी उम्मीद नहीं करना चाहिए उससे वापस मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं उम्मीद करके बिना उम्मीद किए ऐसे ही पूर्ण समर्पण के साथ देना चाहिए। So what is the meaning of this teaching? What is merit? Merit or punya is that action or that speech or that thought that makes the mind more pure. तो जो पुण्य है वो पुण्य क्या है? जो हमारे शारीरिक क्रिया है, वाचिक क्रिया है और मन की क्रिया है, उसको जो हम अच्छा करते हैं वो पुण्य है। So I am sure that all of you have at some time given some gift and hope for some reward. If it's not a material reward, then maybe you want some praise or some good fame and reputation, but this is normal for human beings. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी जब दिया होगा तो कुछ उम्मीद किया होगा। हो सकता है वो उम्मीद भौतिक रूप में ना हो, लेकिन मुझे नाम मिले, मुझे शौहरत मिले, ऐसा उम्मीद कर कर आपने दिया होगा और आम आदमी के लिए ये स्वाभाविक है। But now when we remember this, recall it, how does it feel in your heart? It feels nothing. It's just like the memory of a business deal or a transaction. You just feel nothing. तो आप जब इस चीज़ को अगर याद करें, जो उम्मीद कर कर आप नाम शौहरत उम्मीद कर कर आप दे रहे हैं, तो अगर आप अपने अंदर झांक कर देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये कोई त्याग नहीं है, ये तो एक धंधा है, दो और लो वाला। But now compare this. I think all of you have also in your lives done good deeds, done good things with no hope, even for you don't even want anybody to know that you did it. You did it because it's a good thing to do. But now, when you remember this good thing that you did, how do you feel? You feel good, huh? You feel happy. You feel joy. And this happiness and joy, this is the punya, this is the merit. और आप लोगों ने कभी ऐसा भी दिया होगा जहाँ पर आपने कुछ उम्मीद नहीं किया, ना भौतिक चीज़ों की, ना ही नाम शौहरत की। तो जब ऐसे चीज़ों के बारे में, ऐसे दान के बारे में आप अपने अंदर झांक कर देखते हैं या उसे याद करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशी महसूस होती है। तो वास्तव में ये पुण्य है। So when the Buddha says that giving without hope of reward is more punya, is more merit, you can see for yourself, you can prove this is not just belief. You can see that even if 1 year passes, or 2 years, or 5 years, or 10 years, if you remember that good thing you did, you feel happy. The happiness, it never fades, it's always there like a treasure in your heart. तो जब भी आप बिना उम्मीद के कुछ देते हैं तो वास्तव में ये पुण्य है। और ये जब भी आप याद करोगे 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद, तो जब भी ये याद करोगे तो आपको एक खुशी महसूस होगी। When we meditate, our first challenge is to let go of all the mental confusion and desires and
aversion and sleepiness, or we call nivarana, or hindrances. Any meditation technique must take the mind beyond the 5 nivarana, or hindrances. तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो विचार हैं, राग के, द्वेष के, मोह के, आलसपन के, ये सब विकारों को दूर करना, जिसको हम निवारण कहते हैं, उसको दूर करना ये ध्यान है. So most meditation technique try to avoid all thinking. So, for instance, meditating on the in-breath and out-breath, the anapanasati, or the scanning of the body, like in the Goenka style. But there are also meditation where you can use thinking. तो आमतौर पर लोग ध्यान यानी ये सोचते हैं कि निर्विचार हो जाना, कोई विचार नहीं आना, या फिर खाली सांस को देखना, या फिर शरीर को देखना. If you can sit and close your eyes and recall some good things you have done in your life, pure action, where you had no hope for any reward, then the feeling of joy comes into your heart, and you can make that joy your meditation object. And sometimes that joy from remembering the good things you've done is more powerful meditation than the anapanasati or the Goenka method or whatever other technique you may use. तो ध्यान में आपने जो भी अच्छे कार्य किए, पुण्य किया हुआ है, तो उसको अगर आप याद करेंगे तो एक खुशी उत्पन्न होती है. वो खुशी वो अपने आप में वो भी ध्यान उत्पन्न कर सकती है. The beginning or foundation of Buddhist life, it is something that we can make use of on every level of the path. तो दान देना ही नहीं है, और भी बहुत सारे कदम हैं जिससे हमको ये मार्ग पर हम चल सकते हैं और खुशी प्राप्त कर सकते हैं. So in the beginning we try to overcome and let go of our selfishness and stinginess through giving, and we create the new habit of giving. तो हम लोग दान देकर अपने अंदर जो मत्सर्य है, जो स्वार्थ है, उसको दूर करने का हम करते हैं. At the highest level of Dhamma practice, we have to give up, we have to let go of our attachment to our body and mind. So if we begin with practice of giving, we become very familiar with giving. We start off giving material things, and then this habit helps the meditation, and we can give up our attachment to our body and our mind more easily. और आगे बढ़कर ध्यान में हमें अपने शरीर और अपने विचारों में जो भी है, इस चीज़ों को त्याग देना है, उससे भी चिपकाव नहीं रखना है. लेकिन ये तो ऊंचा त्याग है. शुरुआत जब हम दान से करते हैं तो ये अगर हम त्याग करते हैं तो वो भी आसान हो जाता है. Meditation is not only something that you do when you are sitting cross-legged with your eyes closed. ध्यान यानी केवल आलती पालती मारकर बैठना, आँख बंद करके बैठना, यही नहीं. In daily life, we need to learn how to take care of our mind. रोजमर्रा के जीवन में भी अपने विचारों पर ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, ये भी जरूरी है. In particular, we need to. तो जो
आगे बढ़ते जो विकार है हमारे मन में न आए, इसकी कुशलता हमको बढ़ानी चाहिए। Secondly, when there is defilement in the mind, we need to develop the skill, life skill, of letting go of the defilement. जब मन में कोई विकार उत्पन्न होते हैं तो हमें वो कुशलता होनी चाहिए कि कैसे हम विकारों को त्याग दें, छोड़ दें। Thirdly, we need to develop the skill where we say, in this situation, in this place, maybe it's at home or in the workplace, what virtuous qualities, what kusala dhamma can I practice right here, right now? और साथ ही साथ हमारे अंदर ये कौशल होना चाहिए कि चाहे घर में हो या काम पर हो, हम अच्छे कार्य कैसे करें, कुशल कार्य कैसे करें, ये भी हमको देखना चाहिए। And fourthly, if there are some good qualities of mindfulness and patience and kindness already present in our mind, how can we develop them further? और हमें इस बात का होश रहना चाहिए कि हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, अच्छे विचार हैं, उसको और कैसे बढ़ाए, पर भी ध्यान देना जरूरी है। So wherever we are, we have this challenge, we have this Dhamma work that we can attend to. It's not only something we do in a special posture of sitting or walking in a special place, but it's our whole life. तो ये केवल बैठ के करने वाली चीज़ नहीं है, ये जीवन में हर पल साधने की चीज़ है। So in the practice of the daily life, the precepts are basic meditation objects. रोजमर्रा के जीवन में जो 5 शील है वो भी हमारे ध्यान के लिए एक निमित्त की तरह काम करते हैं। So much of our life we just behave automatically without thinking. हम आमतौर पर अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वो ज़्यादातर बिना सोचे कर देते हैं। Many Buddhists, when they get bitten by the mosquito, they go like that. बहुत लोग जब उनको मच्छर काटता है तो तुरंत उसको हाथ से ऐसे मार देते हैं। But if we take the precept as our meditation object, then the mosquito is biting, for example, and maybe there is impulse to swat the mosquito. This is the habit we have. But then we remember, Panatipata Veramani. This is mindfulness of meditation object, first precept. And you stop, and you stop and you wake up. This is Buddha awakening. Awake from habit, awake from defilement, and you are aware, what am I doing? तो शील को अगर हम ध्यान का विषय बना लें और लगातार सजग रहें इस शील के बारे में, तो जब भी कोई मच्छर काटेगा तो आप ऐसे ही तुरंत उसे नहीं मारेंगे, आप उस पर विचार करेंगे नहीं, पहला मेरा शील है पानातिपाता, मैं हत्या नहीं करूँगा। तो इस तरह से लगातार इस शील को भी अगर आप ध्यान का विषय बना लें, हमेशा उसका होश रखें, तो ये इस तरह से कार्य नहीं करेंगे। So we can say, oh, I am a Buddhist, but what does that mean? It's a label, it's an identity in the society. But the real meaning is we have this Buddha awareness in our mind. So in this case, you remember Panatipata Veramani and you stop
in that moment you become Buddhist, true Buddhist, because it's the Buddhist knowing, Buddhist awareness in your mind at that moment. बुद्धिस्ट होने का मतलब क्या है? एक केवल एक लेबल हो सकता है, एक पहचान हो सकती है, लेकिन वास्तव में बुद्धिस्ट का होना यानी इस शील का पालन करना, इसके बारे में सजग रहना, ये जो है वास्तव में बुद्धिस्ट होना है. So our challenge is in every day, how can we be a Buddhist as many times as possible, as many seconds, as many minutes as possible. Because whenever there is greed in our mind, whenever there is hatred in our mind, whenever there is delusion in our mind, we are not Buddhist. There is no Buddhist awareness at that moment. तो हर पल हमें बुद्धिस्ट रहना है. तो हमारे अंदर जो राग भरे विचार है, जो द्वेष भरे विचार है, जो मोह भरे विचार है, उसे आने नहीं देना है. तो वास्तव में बुद्धिस्ट है राग द्वेष मोह विचारों को आने नहीं देना. इस तरह से अगर हम साधना करेंगे तो सही मायने में हम बुद्धिस्ट हैं. So returning to this example, when we are about to swat the mosquito, we stop, we become awake, and then the wisdom arises because of the mindfulness. And the wisdom said, what should I do? We have a problem. Mosquito is biting me. What is the correct way? And then maybe you can blow it away or something like this. Wisdom comes from mindfulness. Mindfulness, you have to have object of mindfulness. In daily life, first object of mindfulness, basic object of mindfulness is precept. तो ध्यान यानी मूल रूप में सजगता है. जैसे आपने उदाहरण ले मच्छर मारने का, तो अगर आप सजग हैं और मच्छर अगर आपको काट रहा है, तो अगर आप सजग हैं तो आप जानते हैं कि ये तो हत्या करना है, तो हत्या नहीं करना है, इतना आप सजग है. लेकिन खाली सजगता से काम नहीं चलेगा, आपको प्रज्ञा का इस्तेमाल करनी पड़ेगा. तो जब आप प्रज्ञा का इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप उसको न मारकर खाली फूंक मारकर उस मच्छर को भगा देंगे. तो इस तरह से केवल सजगता ही नहीं, प्रज्ञा के साथ काम करना है. हमेशा सजग रहना, ये अपने आप में ध्यान है. So in the world we have so many things are pulling us this way and pulling us that way. We have pressure on us, expectation from our family and from our boss and from society, and so many distractions now. You have a telephone and you are bored, you're upset, you can find some music or some movie. There's so many different ways to run away from yourself. तो आजकल ज़िंदगी में बहुत तनाव है, लोगों की कई उम्मीदें हैं, रिश्तेदारों की उम्मीद है, जो आप काम पर रहते हैं वो भी आपसे कोई उम्मीद करते हैं. फिर आजकल जो मोबाइल फ़ोन है उससे मन विचलित हो जाता है. इस तरह से कई अड़चनें आजकल के जीवन में देखने को मिलता है. But the Buddha said that the only way we can be free of problems is through wisdom. If we run away from problems, it's just like a short-term fix, but then the problem come back again and again and again. But with using the Buddha's teaching, we can eliminate the problem at the root. तो समस्याएं तो कई हैं, लेकिन उनसे भागना, उनसे मुंह फेरना ये उस समस्या का हल नहीं है. तो उनका सामना करना, उनका जो जड़ है उस पर काम करना ये होना चाहिए. So the thing that causes us so much
pain and so much suffering. It's not the society, it's not the people, it's not the economy. These things, they may contribute. They have some role to play, and we should try to improve them when we can. But even if we have a completely equal society, let's say a dream society, everyone is equal economic opportunity, equal education opportunity. Do you think everyone will be happy? No, because we still have the cause of unhappiness inside ourselves. So we need two things. We have the external development, but most important is the internal development. तो समस्याएं हमें अक्सर बाहर दिखाई देते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो सकती है, लेकिन हमारे अंदर के जो कारण है वो वास्तव में समस्या की जड़ है। बाहर की जो समस्याएं वो एक मायने में योगदान हो सकती है हमारे परेशान करने के लिए, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर के जो विकार है वो हमारे लिए परेशान करते हैं। So maybe you have observed that you were in a very nice place, or maybe let's say you have a good fortune, you win the lottery, or you have a lot of money and you can go on holiday. Take your family to the most beautiful place, just like in a dream. And then when you arrive, you have an argument with your husband or your wife. And that pain in your heart is more important than all the beautiful scenery around you. The heart is more powerful than the environment. Similarly, we can be in a quite difficult situation, not beautiful. You don't want to take a photograph and put on Facebook, it's not beautiful. But you can be very happy in such a place. If your heart is content, if you're living in harmony with the people around you, you have good friends, you have a loving family, then it's more important than environment. So we need two things, environment also, but number one is the human heart. जैसे मान लो आपके पास पैसा है, लॉटरी लग गई, तो आप अपने परिवार सहित कहीं घूमने फिरने जाएंगे, फोटो उतारेंगे, सब कुछ अच्छी जगह घूम कर आएंगे। वापस घर आकर मान लो आपका पत्नी से या पत्नी का पति से झगड़ा हो गया, तो उस झगड़ा और बहस में जो अपने दिल के अंदर जो दुख उत्पन्न होता है, तो उसे देखने की आवश्यकता है। वहाँ पर जो असंतुष्टि है वो सही मायने में दुख है। तो बाहर का कितनी खुशी, अंदर अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है इस तरह से, तो उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर आपके संबंध लोगों से अच्छे, सहानुभूति और मैत्रीपूर्वक आप लोगों से व्यवहार करते हैं, उनका भी व्यवहार आपसे अच्छा है, इस तरह से जो अंदर से खुशी मिलती है वो सही मायने में खुशी है। तो बाहर के मायने में आपको खुशी देने में सहयोग हो सकते हैं, लेकिन सही मायने में तभी खुशी मिलती है जब आपका व्यवहार दूसरों के प्रति और आपका स्वभाव अच्छा हो, तो अंदर से जो खुशी आती है वो सही मायने में वो ज़्यादा ज़रूरी है। So the Lord Buddha's teachings are like a technology for transforming a human being. If we take the teaching as tools that we can use to cultivate our conduct, our actions, our thoughts, our emotions, then we can find a smooth path on the bumpy road. तो बौद्ध धर्म भी एक बुद्ध धर्म की शिक्षा एक टेक्नोलॉजी की तरह है, जिससे अपने शरीर, अपना मन, इसको कैसे हम काबू में रखें, जिससे कि हमको जो जीवन में जो अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव है उसका हम सामना कर सकें। So we can translate
or express the first noble truth. Usually this is expressed as life is suffering. But another way of saying this is life is a bumpy road. तो पहला आर्य सत्य ये कहता है कि जीवन दुख है, लेकिन और एक ढंग से हम कह सकते हैं कि ये जो जीवन है ये एक उतार चढ़ाव वाला रास्ता है. So this is the normal state of being a human being. We have very fragile, vulnerable bodies. They don't last very long. They get old, they get sick, they die. This is just part of being human being. It's like a bumpy road, you know, it's always going to be like this. But we don't have to suffer because of the nature of things. If we use the Buddha's teaching, we can have the body get old and sick and die, but we are not suffering because of this nature. तो जब शरीर है तो बीमार होना, बुढ़ापा आना, मरना, ये सब जीवन का हिस्सा है, स्वाभाविक है. तो उसे दुख न लेकर उसके जीवन का एक हिस्सा ऐसे स्वीकार करना चाहिए. So pain and suffering are not the same thing. दर्द और दुख ये एक ही नहीं है. For example, in the last year of his life, on one occasion, the Buddha was giving a discourse to a big group of monks, and he called Venerable Ananda. He said, Ananda, please, you can carry on with the discourse. The Tathagata has been sitting so long, I have the backache. I need to go and lay down. So even the Buddha himself, when he got old, he had the aches and pains, just like normal human being. But he had no suffering because he did not make this idea of my body, my back. If we have this idea, me and mine, there is only suffering. If we let go of this idea, बुलाया और आनंद से कहा कि आनंद, मुझे पीठ में बहुत दर्द दे रहा है, तो मैं आराम करता हूँ, आप इस प्रवचन को जारी रखें. तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध को भी पीठ का दर्द था, लेकिन उन्हें दुख नहीं था. दर्द और दुख अलग है. अगर उस दर्द को मेरा दर्द, मेरी पीठ दर्द दे रही है, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा अगर हम सोचेंगे, ऐसा अगर हम देखेंगे, तो फिर वो वास्तव में दुख है. लेकिन ऐसा न देखकर कि ये मेरा शरीर, ये मेरा, मैं, मेरा, इस भावना को जब हम त्याग देंगे, तो हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उससे आदमी दुखी नहीं होगा. So I arrived in Thailand at the age of 20 years old. मैं थाईलैंड में 20 साल की उम्र में आया था. I went to live in the forest monastery in northeast Thailand. तो मैं उत्तर में जो जंगल की परंपरा है, आरण्य परंपरा, उस विहार में जाकर रहने लगा. The life is उस समय पर भिक्षुओं का जीवन बहुत ही कठिन था. We get up every morning by 3 a.m. and usually 10 p.m., 11 p.m. before we can sleep. हम लोग वहाँ पर रोज सुबह 3 बजे उठना पड़ता था और रात के 10 या 11 बजे सोने जाना पड़ता था. We only eat one meal every day. हम लोग रोज केवल एक टाइम ही खाते हैं. But I was so happy to find my teacher. और
जो मेरे आचार्य थे उनको मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई। When I met my teacher, दुनिया में रह रहा था, अब मुझे जो है मेरे सामने एक असली फूल मिला है। this is what a human being can be. वास्तव में मनुष्य ऐसा हो सकता है। My teacher was born in very poor family. He only had 4 years of formal school education. मेरे आचार्य का बड़े ही गरीब परिस्थिति में जन्म हुआ था और उनको केवल 4 क्लास की शिक्षा प्राप्त हुई थी। But he was loved and he could not speak any other language, only his own language. लेकिन उनको जो है थाई छोड़कर दूसरी भाषा नहीं आती थी। Many of the monks from other countries were very highly educated with degrees, bachelor degree, master degree, even doctorate. लेकिन उनके जो दूसरे शिष्य थे, जो भिक्षु थे, वो बहुत ही ऊंचे पढ़े हुए लोग थे जिनके पास डिग्रियां, मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट वगैरह थी। And he had only primary school education. और उनको केवल, और जबकि आचार्य के पास केवल प्राथमिक शिक्षा थी। But he had the Dhamma in his heart. लेकिन उनके हृदय में धम्म था। So everything he did, everything he said was so powerful. तो इसलिए वो जो कुछ भी कहते थे, जो कुछ भी करते थे, वो बहुत ही प्रभावी था। One time somebody asked him, "Can you speak English?" And he said no. He said, "Can you speak German?" He said no. "Can you speak Japanese?" He said no. And then the person, "Well, how can you train all these monks if you cannot speak their language?" तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप अंग्रेजी जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। आप जर्मन जानते हैं? नहीं। तो आप जापानीज जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा जब आप ये भाषाएं जानते नहीं तो विदेशी लोगों को आप कैसे शिक्षा देते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं? "Do you have cows?" He said yes. He said, "Do you have water buffalo?" He said yes. He said, "Do you have the dogs?" He said yes. "Do you speak cow language? Do you speak water buffalo language? Do you speak dog language?" No? Then how can you train this? How can they live with you in this way? तो फिर आचार्य ने उनसे पूछा कि तुम गाय पालते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो क्या तुमको उनकी भाषा आती है? तो फिर तुम कैसे उनके साथ रहते हो, कैसे उनको शिक्षित करते हो, कैसे उनको ट्रेन करते हो? So he said, Westerners, they are like the water buffalo. You just pull them this way and pull them that way, and soon they understand. तो उन्होंने कहा ऐसे ही शिष्य हैं, वो भैंस की तरह है, उनको इस तरफ खींचो, उस तरफ खींचो और वो सीख जाते हैं। So when my teacher taught the Four Noble Truths, he didn't need to use a lot of language, but he showed us the Four Noble Truths. तो जब हमारे आचार्य 4 आर्य सत्य सिखाते थे तो उन्होंने हमको मतलब थियरी के रूप में कुछ सिखाया नहीं, लेकिन उन्होंने हमको वास्तव में बताया कि 4 आर्य सत्य क्या होते हैं। In the morning, the monks go on the alms round and walking from the jungle in the monastery outside to the village and walk and come back, and maybe it's 4 kilometers, 5 kilometers, 6 kilometers, and on the way back your bowl is full and it's a sticky rice, so it's quite heavy. तो जैसे
सुबह सुबह हम लोग भिक्षाटन को निकलते हैं। वो 4-6 किलोमीटर गांव में जाना, जंगल में से गांव में जाना, फिर गांव से फिर वापस आना, और फिर उसमें वो चिकना या स्टिकी राइस जो कहते हैं वो डालते हैं, और वो बहुत भारी रहता है, तो उतना वजन लेके इतना किलोमीटर चलते हुए वापस आना। So by this time we've not eaten anything for 24 hours, very hungry, and also some days we're working quite hard in the forest. So by the time the daily meal comes, then we are very hungry. तो इस तरह से 24 घंटे तक हमने खाया हुआ नहीं होता, और बहुत सारा काम भी करना पड़ता है, और दूसरे दिन इस तरह से चलकर खाना लेकर आना पड़ता है। And so sometimes our teacher, seeing all the monks restless and wanting to eat something, he would talk to the donors of the food for a long time, just so that we could see all our desire for the food and our irritation and our restlessness, until eventually he would give the blessing and we could eat. तो जब लौट कर आते इस तरह से भूखे और इतना वजन लेकर, और वो जो बेचैनी, वो जो भूख रहती, तो हमारे आचार्य उसको देखकर जानबूझकर देर तक उपासकों से बात करते, ताकि हम उस भूख को देख सके, उसको अनुभव कर सके, उसे गौर से जान सके। He said, if you want it fast, I give you slow. If you want it hot, I give you cold. So for monk, you see, if you have the thinking, I want to eat, why can I not eat? I want it hot, why is it cold? So much suffering. So the Buddha, the teacher is teaching the Four Noble Truths. The suffering is coming from the thinking. It don't come from the body. And so if you just say, oh, whenever it's time to eat, we will eat. And cut off all the thinking, and there's no suffering. And so he's showing just some discomfort, physical discomfort, which is the nature of the human body. But we make the suffering on top of. इस तरह से जो सोचते हैं, वो सोच के कारण ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर उस विचार को हम त्याग दें तो फिर कोई दुख या चिंता महसूस नहीं होती। तो इस तरह से इन विचारों में हमारा दुख है, विचारों से तकलीफ है। अगर उस विचारों को हम काबू कर लें या उस प्रकार के जो विचार है उसको अगर निकाल दें तो फिर हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। So if in your life you can see that sometimes somebody does something, maybe it's your parent or maybe it's your husband or wife, maybe son or daughter, and then we say, they made me so angry. No. But no, no one can make you angry. If you are angry, you want to be angry. तो अगर मान लो आपके माँ बाप भाई बहन कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसके कारण आपको गुस्सा आता है और आप कहते हैं कि इनके कारण मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वास्तव में उनके कारण गुस्सा नहीं आ रहा है, आप गुस्सा करना चाहते हैं इसलिए आपके अंदर गुस्सा आ रहा है। So where does the anger come from? It comes from your thinking. He should not do that. She should not say that. They should not be like that. They should not be that kind of person. तो ये जो गुस्सा आ रहा है कहाँ से आ रहा है? ये तुम्हारे अंदर से आ रहा है, क्योंकि तुम सोचते हो कि ये आदमी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आदमी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, इसका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप सोचते हैं, इसलिए आपको गुस्सा आता है। So you make yourself angry through your wrong thinking. तो आपके गलत विचारों से आप अपने आप को क्रोधित करते हैं।
and anger makes you stupid. और गुस्सा आपको मूर्ख बनाता है. When you are angry, everything is black and white. I am right, you are wrong. तो जब आप गुस्से में रहते हैं तो केवल काला और सफेद होता है, यानी मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है. But things arise, they occur because of causes and conditions. If you have anger in your heart, you don't have mindfulness, you don't have wisdom to see what are the causes and conditions and what is the intelligent way to solve the problem. तो जो भी उत्पन्न होते हैं वो कारण और परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं. तो आपके अंदर वो सजगता और वो प्रज्ञा होनी चाहिए जिससे आप जान सकें कि किस कारण से, किन परिस्थितियों के कारण ये उत्पन्न हो रही है. When you're angry, you say things and do things that are too strong, and afterwards you feel bad. जब आपको गुस्से में रहते हैं तो गुस्से के कारण आप बहुत कुछ गलत कर देते हैं, फिर आप खुद उसके बाद अफसोस करते हैं. So the practice of mindfulness helps you to see when, before you get angry, you can just see the beginning. It just begin to start in your body, in your mind, and with mindfulness you can just let go. तो जब आप सजग रहेंगे तो सजगता जब रहेगी तो आप देख पाएंगे कि कैसे गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, कैसे विकार उत्पन्न हो रहे हैं. तो इस सजगता से आप उसको रोक सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं. But to solve the problem at the root, you need to use the wisdom and not to have the wrong thinking which creates the mental defilement. तो उनको जड़ से उखाड़ने के लिए आपके पास प्रज्ञा होनी चाहिए. प्रज्ञा से उसे जड़ से उखाड़ा जा सकता है. So I think I've been talking for quite a long time now, and the Venerable is very hard work translating like this, and express my appreciation for your work, and offer blessing for all of you, and to grow in dana and sila and bhavana, and to use the Buddha's teaching to make your own heart happy, to receive the benefit from Buddha Dhamma, and then be able to create and help other people to be happy and to create benefit for your community and your country. तो लगता है मैंने ज़्यादा समय ले लिया है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप दान, शील और समाधि में आगे बढ़े, और आप सबको मैं जो है हर प्रकार से मंगल कामना करता हूँ. Okay, I want a better sadhu than that. I want your sadhu to be so loud that everyone in Akola can hear. मुझे आपके साधु का शब्द इतना चाहिए कि सारा अकोला सुने उसे. इतना जोर से कहना चाहिए साधु. Okay, that's okay. But now I want sadhu so loud, everyone in Maharashtra can hear. अब मुझे साधु का शब्द इतना जोर से चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दे. आले ते आत्मभान भीम
घे